So that is the second Indian aircraft to be able to get back its citizens safely. Take a look at that special report now from Delhi about the Afghan refugees anxious about their families still trapped in Afghanistan. हमने वो फार्मूला रख ले पूरी कुव्वत के साथ तो उससे तालिबान के लिए या फिर दीगर फरीकों के लिए इनकार करना मुमकिन नहीं होगा. They are watching the horror unfolding back home. On their minds, a bleak future. Afghan refugees in the national capital are on the tenterhooks. They are safe here, but their families not so much. They fear for their families still stranded in Afghanistan. 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक नहीं खाया क्योंकि टेंशन में भूख नहीं आती. कैसे भूख? हमारा पड़ोसी हमारा सब लोग वहाँ पे बिना पड़ोसी के वो हमारा अफगानी लोग हैं, वो हमारा भैया दीदी माँ है वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे हमारे बंद हैं. This young mother has decided to stay back in India for the safety of her daughters. अगर मुझे मरना भी है इंडियन में मरना है लेकिन वहाँ पे मैं अपने बच्चों की खातिर मैं अपनी खातिर नहीं जाऊँगा. What is happening in Afghanistan has clearly become talk of the town here in the Afghan colony in Delhi. What do the young men, Afghan men living in Delhi, have to say about the situation and the horror unfolding back home? ये सब कुछ जो अफगानिस्तान में अभी हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का ISI इसका हाथ है. अगर पाकिस्तान ये ख्वाब देख रहा है कि तालिब ने अफगानिस्तान को पकड़ लिया तो जो हम चाहते वही होगा. आप ये ख्वाब अपने साथ कब्रिस्तान में लेके जाओगे. अगर हालत सही था तो सारा तो जाएगा. तभी हर बंदे का वतन मामी है उसका. हर बंदे का पसंद है कि वतन से अपने वतन से ज़िंदगी करेगा ना. हम लोग का भी तो सही है ना मैडम. हम लोग का भी चाहिए कि हम भी अफगानिस्तान जाएगा. हम इधर पढ़ाई किया, उधर डॉक्टर बनेगा, उधर स्टूडेंट, उधर कॉलेज पढ़ती इधर. These Afghans have taken refuge in Delhi, but their real home remains Afghanistan. Now, under the total control of Taliban, the regime they fled from. Their forced exile just got extended further. One of the last cultural bonds for the Afghans in Delhi are these restaurants and the shops that have been named after their hometown and home cities. There's a Nanwai, also again trying to reach out with the taste of the bread of Afghanistan. But while now they are watching the horror unfold in Afghanistan, visuals on their mobile phone, on television screens, even they are aware that while they hope to return, the reality will take longer than usual since the Taliban has taken over. This special with Sachin Chandok, Pooja Shali for India Today. So while that was our special report, I have this mother with 2 kids. हमें क्विकली हमें बताइए, अभी हम जब अफगान लोगों की बात करते हैं, क्या दिल्ली में आप लोग रह रहे हैं? बहुत टेंशन है वहाँ की सिचुएशन का अपने लिए यहाँ पर भी? यस मैम, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के सामने है. हम यहाँ पर जितने भी रिफ्यूजी लोग हैं, जितने भी अफगान लोग हैं, सब प्रॉब्लम्स में है. यूनिसियर को हम कॉल करते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो कहते हैं हम करेंगे. लेकिन लोग हैं इस यहाँ पर 10 साल है, 6 साल से एक रिफ्यूजी कार्ड हमको नहीं मिलता है यहाँ पर. So what they are saying is that they have their problems in Delhi, so that also they want to be heard. 2 young kids. Now you have a special report that I have made for you about the Afghan Sikhs. Remember, the minority in Afghanistan will be on specific target of the Taliban. Take a look at this story. Here in India, Afghan Sikhs are collecting information on those in need back home. Pratap Singh is from Jalalabad. Today he is coordinating with Sikhs in Afghanistan and those who fled to India. इनकी चिंता में बच्चों की सब बच्चे आ रहे हैं. परिवार भी आए हैं, इसी के लिए आए हैं. कुछ चिंता लगी है. गुरुद्वारा साहब आके बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि इन लोगों को क्या होगा. तो हम एक उम्मीद करते हैं दोनों सरकारों से, जो हमारे लोग संगत फंसी हुई है, जो काबुल में है, तो उनको बड़े हराम चाह से उनको सिक्योरिटी मिल जाए और आराम से दिल्ली में आ जाए. The community is reassured by the Ministry of External Affairs statement that the government is in touch with Hindus and Sikhs in Afghanistan. हम बहुत खुश हैं
कि गवर्नमेंट हमारी ये उपराला कर रही है कि जो हिंदू सिख वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाल कर ले आए। अगर ये मदद कर सकती है हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। शीशे मिल तो रही है, नहीं मिल रही, मगर बहुत स्लो काम हो रहा है, फास्ट काम नहीं हो रहा है। जैसे हमारा फास्ट काम किया जाए, बस सबसे पहले स्टडी में दिया जाए, जो लोग फ्री हो जाएंगे अपना काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, बाहर जाएंगे। While they have settled here now, the scars remain, the memories haunt. Harbaz Kaur's husband was killed in a terror attack on a gurdwara in Kabul in March 2021. She is dependent on her community members now. In Kabul, Taliban fighters recently landed up at a Sikh shop gathering information about the community. They assured the Sikhs they are safe, but the fear remains. While the brutal Taliban has spared no one, on direct target will be the ethnic minorities, as history have shown. But the Afghan Sikhs in Delhi are watching, and they are in hope, perhaps praying that the ones who need any help can be given there in Afghanistan and that all remain safe and well. The Afghan Sikhs have made their temporary home in the national capital, Delhi, but the hope to return at some level also remains. With Sachin Chandok in Delhi, Pooja Shali for India Today. So that was my special telecast from the ground about the minorities, about the Afghans who are waiting for their people back home and hoping and praying they will be safe.